Prime Minister Narendra Modi was in Madhya Pradesh today and sent out a very strong message on what is considered to be one of the most contentious topics ever since his government took over, the status of Indian Muslims in India. Even as a committee has invited stakeholders to opine about bringing about Uniform Civil Code, now popularly known as UCC, in the country, Narendra Modi focused on the inequalities faced by citizens because of different rules. How do you look at it, Pankaj? I mean, it's, I think, after a long time, when we were sitting in the newsroom, we all jumped up, Right. We said, ye kya ho gaya, So, do you think that, I mean, like I said, and is it the Prime Minister speaking, or is it, I mean, forget about the BJP karyakartas, forget about who he was addressing, the message came to all of us, or it is just because elections are on the anvil in Madhya Pradesh? Well, as you rightly mentioned, Sudha, there are lots of aspects to look into as of now, as far as this Prime Minister's speech is concerned. Elections, yes, any discerning audience would say that चुनाव के समय तो हमेशा यही बातें होती ही हैं. But this time around, what Prime Minister Modi has reiterated and underlined is the fact that how a BJP government, which generally is under fire for negating the interests of the minority, especially Muslims, this time around Prime Minister Modi tried to undo that notion and put the blame squarely on the opposition, especially Congress, for having negated these traditionally backward Muslim subcaste, subsects, which he mentioned, about Pasmandas, about how other, sects in Muslim community have faced the hardships in the past. Now, the question is this just a political gimmick that Prime Minister Modi came up with, or is there some fact to back this up? So I was, before the show, it turned out that when we were discussing the idea, the reason behind doing the show with our editor, Kartikeya Sharma, so he mentioned a fact that there was a report by Economic Advisory Council member, Shamika Ravi, which spoke about the reach of the amenities, the government amenities, to the poor people in the hinterlands of the country. Now, the data, the long and short of the data is that, be it electricity access, be it bank account access, mobile phone access, or for that matter toilet and access to cooking gas, all these aspects, the recent report of the Economic Advisory Council member Shamika Ravi says that minorities, especially not the majorities, primarily Hindu, but the minorities have been the biggest recipients of it, and there are numbers backing them also. And Muslim minorities especially have benefited more from it. So the talks of whether this government is pro-Muslim or not, this report, which came straight away to my mind and to Kartikeya's mind, was that there is no evidence of discrimination. There isn't, but I'm going to play the devil's advocate. I mean, they are a minority, and if they are getting all the benefits, it's their right, right? No one is doing them a favor. I mean, if the central schemes, whether it is Griha Lakshmi, whether it is Ujjwala, whether it is anything, they are the citizens of this country. But the point is that the whole conundrum is about, there is supposed to be no caste in Muslims, but there is, and those who are backward and most marginalized, most oppressed, it is just that they do not get everything that perhaps the majority community gets as being oppressed. Let me get Ali Anwar Sahab into this. Ali Anwar Sahab, how do you, आप क्या इसको कैसे देखते हैं कि ये जो प्रधानमंत्री जी ने अभी ये घोषणा की, he made this announcement कि Pasmandas have been, subsequent governments have not done anything for them, और उनको बहाल करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए. आपको क्या लगता है कि ये वो प्रधानमंत्री है जो सबका विकास, सबका प्रयास की बात करते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शंस पर उनकी नजर है? देखिए, अभी बहुत गौर से मैं सुन रहा था प्रधानमंत्री जी को, शायद मध्य प्रदेश में बोल रहे हैं और वहां चुनाव होने वाला है. विदेश दौरा के बाद शायद ये पहली उनकी मीटिंग है. तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि पसमांदा, ये पसमांदा नहीं है, पसमांदा है. तो
तो चलेगा इतना उनके लिए। सब तो हमने चलाया है, लेकिन उसमें उच्चारण में थोड़ा सा सुधार हमने बताया। तो कहने का मतलब प्रधानमंत्री जी ठीक कह रहे हैं कि मुसलमानों में कई जातियों का, बहुत सारी जातियों का, करीब 1 दर्जन जातियों का नाम गिनाया है। और उसमें इन्होंने बताया है कि उसमें धोबी भी होते हैं, उसमें हलाल खोर होते हैं, भंगी कहते हैं उसको, खाकरोब कहते हैं, हेला कहते हैं, कहीं होलैया कहते हैं, तो स्कैवेंजर हैं ये। तो इस तरह की जातियां हैं, बंजारा है, मदारी है, सपेरा है। तो उस भटियारा का भी नाम लिया। सही बात है कि मुसलमानों में ये सब जातियां हैं। और बजाते सरकार की जो सूची है अदर बैकवर्ड क्लासेज की, उसमें इन जातियों का जिक्र है। मुस्लिम मोची हैं। तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इनको हम मदद करना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी खुद ही कह रहे हैं कि मुसलमानों में मोची भी हैं, भटियारा भी हैं। भटियारा डेरोगेटरी शब्द है, लेकिन अब क्या कीजिएगा, है उस सूची में है, तो इसलिए हम भी नाम ले रहे हैं और वो भी नाम ले रहे हैं। ये हकीकत भी है और सरकारी सूची में भी, सेंट्रल लिस्ट में भी है, स्टेट लिस्ट में भी। तो जब ये जातियां हैं, हलाल खोर कह रहे हैं, ये भंगी लोग हैं, स्कैवेंजर, मैला ढोने का काम करते हैं, मैला साफ करने का काम करते हैं। तो भाई पसमानदा मुस्लिम तो मांग कर रहे हैं। हमने एक लंबी चिट्ठी भी लिखी। सबसे पहले पसमानदा शब्द को अपने जुबान पर प्रधानमंत्री जी लाए पिछले साल वहाँ हैदराबाद की मीटिंग में, फिर दिल्ली की मीटिंग में। तो हमने शुरू में ही एक लंबी चिट्ठी लिखी कि भाई इतनी हमदर्दी है आपको, तो पसमानदा में जो अति पसमानदा हैं, जो दलित हैं, जिनको रजील कहा जाता है, उनको, रजील बने होता है निकृष्ट, नीच, कमीना। तो इस तरह की जातियां हैं, तो जिनको समाज सोशल स्टेटस उनका ये है, तो उनको एससी का स्टेटस दे दीजिए। तो उन्होंने स्टेटस देने के लिए एक ये रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट ने कहा कि दे दीजिए, सच्चर कमेटी ने कहा दे दीजिए। बिल्कुल। तो सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी को तो बिल्कुल नकार दिया, मानते ही नहीं है बीजेपी। प्रधानमंत्री जी की पार्टी कहती है कि नहीं, हम इसको नहीं मानेंगे। चलिए, नहीं मानेंगे। आपने एक नया कमीशन बना दिया, केजरीवाल कृष्णन साहब रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं, उनके नेतृत्व में इस बात को एग्जामिन करने के लिए फिर बना दिया। जब ये मामला 18 साल के बाद आया, बहस पर सुनवाई में आया, जब इसके पहले के चंद्रचूड़ साहब के पहले के यूयू ललित साहब के बेंच में जब आया और सुनवाई होने वाली थी, तो उसको रुकवाने के लिए कहा कि रुक जाइए, से हम इसके लिए एक कमीशन बना रहे हैं, आप इस पर सुनवाई रोकिए। तो कमीशन बना दिया। तब तक आ गए चंद्रचूड़ साहब, उनका कार्यकाल बहुत कम था यूयू ललित साहब का, चंद्रचूड़ साहब आ गए। तो इनके आने के बाद जब ये सुनवाई शुरू किए, तो इन्होंने कह दिया, एफिडेविट दे करके कह दिया कि नहीं, हम इनको देने के पक्ष में नहीं, ये तो विदेशी मुसलमान है, इनके साथ तो छुआछूत नहीं, भेदभाव नहीं होता है। ये आज तो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज में भी उनके साथ भेदभाव होता है। मैं अली अनवर साहब, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि कैसे उन्होंने अनाउंसमेंट जो की, वो आप कह रहे हैं कि वो मात्र काफ़ी नहीं है। और जिस तरह की मैं पंकज जी से भी मैं यही कह रही थी कि उनकी मांग थी कि रिजर्वेशन उनको दिया जाए, ताकि वो इतने पिछड़े हैं, इफ दे आर सो मार्जिनलाइज्ड, हाउ टू ब्रिंग देम इनटू द मेन स्ट्रीम, बिकॉज दे आर इकोनॉमिकली, एंड इन अदर वर्ड्स, you know, in several other words, I know that there is a conundrum because Islam, you know, does not recognize caste, but what to do? I mean, they are, like he said, you know, he spoke about Sikhdars, he spoke about others also. Dr. Navneet Anand, let me invite you into the debate. What do you think, sir, explains Modi's outreach towards Muslims? What is the explanation? Good evening, Sudha. Thank you so much. And to me, this has to be seen as a continuum of an endeavor by Prime Minister Modi as well as the BJP to adhere and stick to what they profess in the form of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas. Based on what I read, what I hear from leaders and my own travel experiences, I can tell you that on the ground, this is creating impact. Ali Anwar Sahab will know better.
But as a journalist, as my profession takes me to places, I realize that the appeal and intent of Prime Minister is creating reasonably decent impact. What So, for impact do you instance, see? I so mean, for impact instance, can, in people may Bihar, say, no, I'm sorry, I'm stopping you here because I'm a fellow journalist and of yours. Dr. Anand, on the one hand, people can say whatever, but they may vote differently. So I think all this about creating impact is actually a mirage now. Not really. On the ground, things may be changing, and even if it is very, very incremental, Sudha, I would think this is a gigantic change. So, for instance, in my recent visit to Bihar, we met people from the community, Muslim community, who spoke not only very highly of Modi ji, and they said that we are not going to vote, of course, for obvious reasons, but they said that women today are largely voting. We know of women in our own family, and others who are either inclined or have begun voting. Right. Right. Okay, So so let me, that is the kind of impact we are looking at. Gautam Mukherjee, I want to ask you that is the PM right in saying that, the government schemes have benefited all? There has been absolutely no kind of a bias shown. I stuck my neck out with my very dear colleague Pankaj and I said, it's their right. What will you say about it? Well, at an estimate, about 40% of the welfare has gone to Muslims, which is commendable considering that the Muslim population, all in all, is around 20% or less. So that is good, and it is because there are concentrations of Muslims that in certain areas, and since this is, as you rightly pointed out, a government welfare provision, many of them, so they should go to all irrespective, and you can't say, well, since you're in a cluster, I'll skip you. What Modi may be trying to do, based on whatever information he's been given, is to drive a wedge between the high-class Muslim, the Saids and so on, and the lower-class Muslims, because they constitute 85%. Now, if he succeeds to any degree, it is better than 0 votes from the Muslims, no matter what, because BJP is a Hindu communal party, according to the opposition. The other aspect is it certainly might enhance the PR value of a Muslim outreach, irrespective of whether it yields any actual votes. Right. If women are voting, they are not in a large number, despite Triple Talaq. So all of it is a new gambit, and there must be some calculation behind it. I can only think that it's trying to drive a wedge. Right. Manasvi Thapar, let me bring you in. I want to ask you, he spoke about the Uniform Civil Code. Do you think that's even practical? I mean, Uniform Civil Code, the detractors have said, will not work because it is more cultural and social, the way we are. Also, you'll be interfering into personal laws of different communities. This cannot really work. But do you think that what Prime Minister Modi said about UCC is even practical, sir? Sudhaji, UCC has been on the BJP manifesto since last 16 times. It has been mentioned in their manifestos. But before I get into the practicality of it, the biggest question what comes to my mind as a political speaker would be, is there a political will out of it? They have been in power since 9 years, a consistent 9 years, a very strong political domain they are into it, and they can pass UCC very smoothly right now. And they could have done it much earlier also, but they have not done it. Is there a political will or there is an electoral will? There is a difference between both the two. UCC has been in their manifesto in 2014 also, and what is very interesting, Sudhaji, is exact word to word the same thing of UCC
has been mentioned in the 2019 But Manasvi, manifesto. ऐसे थोड़ी आप lawyer हैं, so you are better in a better position. You know, the committee, the stakeholders had gone back. I mean, there was no consensus on it. It's not that I can pass the law sitting there just because it's my rule. No, Pankaj, that's what we were, how the earlier committee had gone off, and now the new committee has again, you know, invited opinions from several people. So, unless that committee speaks, and then perhaps, you know, you can go ahead. Manifesto में तो था, लेकिन law ऐसे चुटकियों में तो नहीं बनता. सुधा जी, मैनिफेस्टो में था, लॉ चुटकियों में नहीं बनता, ये तो सबको पता है. मतलब ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी को नहीं पता है. द पॉइंट, ये कमिटी बनाना और कमिटमेंट होना दोनों बहुत अलग चीजें हैं. कमिटी बना सकते हो आप, कमिटी बदल भी सकती है, बट द रियलिटी इज वेयर इज द रियल कमिटमेंट, वेयर इज द रियल विल. In 1996 also there was in your manifesto, then again it was in 1999, then 2004, 2009, 2014, 2019, and again 2024 during the, now we know it's an election year the next year. So you bring this topic back, but is there a my basic question is there a real political will out of it, or it is just going to be a political electoral? That's what I started the conversation saying that. Ali Anwar साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ, दो सवाल पूछूंगी. तो पहले सवाल ये है, आपको क्या लगता है कि ये सब जो कह रहे हैं, क्योंकि सब लोग कह रहे हैं ये बड़ा बहुत अच्छा और बड़ा जो है आउटरीच है मुसलमानों के तरफ, कि कहना, ट्रिपल तलाक की बात करना, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करना, और जो पिछड़े मुसलमान हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, उनके बारे में बात करना. आपको क्या लगता है ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव है, या फिर आपको लगता है कि ये हमारे देश का प्रधानमंत्री बोला आज, जो सबका विकास, सबका साथ, सबका प्रयास, उन सब की सराहना करता है? क्या कहते हैं आप? काश ऐसा होता कि प्रधानमंत्री जी के साथ ट्रस्ट डेफिसिट जो है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं, धीरे धीरे बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि वो जो करते हैं, वो कहते हैं, वो करते नहीं. तो कहने का मतलब ये है, देखिए सबसे पहली बात कि ट्रिपल तलाक पर हम बात आते हैं. तो आज सुन रहे थे आप से कि ट्रिपल तलाक पर ये बोल रहे हैं, तो ट्रिपल तलाक का बिल का अब कौन विरोध कर रहा है? मुसलमान, जितने मुस्लिम धार्मिक संगठन हैं, उन सब लोगों ने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मिल्ली काउंसिल, जमात इस्लामी, सब लोगों ने, इस जमीयत उलमाए हिंद, सब लोगों ने उसको मान लिया. लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा क्या हुआ? अब उसको पुरानी बातों को क्यों दोहरा रहे हैं? तो सबने मान लिया है ट्रिपल तलाक, और उसका क्या नतीजा है? नतीजा तो ये है कि और ज्यादा तलाक की, न तलाक देते हैं न बीबी को साथ रहते हैं. तो बिना तलाक के बीबी को तलाक भी नहीं देना, उनको साथ रहने. अभी प्रधानमंत्री जी ये बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इसकी क्या त्रासदी होती है, और कोई महिला ही समझ सकती है कि उसका शौहर तलाक भी न दे और उसको अपने साथ रखे भी नहीं, उसको खेवा खर्च भी, उसको गुजारा भत्ता भी नहीं दे. ये क्या है?